Hello young friends. So here we are going to do problems on Newton's second law of motion. Okay, what is Newton's second law of motion? So formula that we use is F is equal to ma. Okay, so you have to remember that is Newton's second law of motion. Now here we have first question. What is the momentum of a man of mass 75 kg? So we'll write down the data given is mass is 75 kg. Okay, and we are given when he walks with a velocity of 2 meter per second. So we will write down velocity is given as 2 meter per second. And what are we asked? What is the momentum? Yes, how is momentum defined? Mass into velocity, or the product of mass and velocity. So we'll write down momentum. Short form of momentum is P, which is given by mass into velocity. Yes, so here what is the mass? 75 into velocity 2. So when you multiply, you get 150 kg. Kg is the unit for mass, and for velocity it is meter per second. So overall you get momentum as 150 kg meter per second. Fine. Okay, so here we have the second question. Now what would be the force required to produce an acceleration of 2 meter per second square? So what is the acceleration? 2 meter per second square. And what is asked is force. What would be the force? So we'll write down force is equal to question mark, and you are given, what is given here? Acceleration. So acceleration is 2 meter per second square, and mass of the body is given as mass is equal to 12 kg. Clear? Now what you need to find out? First you need to find out force. As we know by Newton's second law, F is equal to m into A. What is the value of mass? Mass is given by 12. Acceleration is 2. So what you got? 24, and unit for force is Newton. Clear this much? First part of the question. Then you have second part of the question. What would be the acceleration if the force were doubled? Yes, so here what they are doing, force is doubled. So how much force you will take when the force is doubled? Yes. Fine. Force is doubled. Now how will the force become double? Force will become double only when acceleration is doubled, because mass will remain same. मास तो वही रहेगा, मास तो बॉडी का चेंज नहीं होगा. करेक्ट है. और हमें फोर्स डबल करना है, तो फोर्स डबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मास तो वही रहेगा, एक्सेलरेशन हम डबल करेंगे. आर यू गेटिंग? फाइन. तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन डबल करना पड़ेगा. नाउ एक्सेलरेशन डबल करना है. हमारा ओरिजिनल एक्सेलरेशन कितना है? 2. करेक्ट. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू 2 इंटू 2. तो एक्सेलरेशन हमें क्या लेना पड़ेगा? ओवरऑल एक्सेलरेशन हमें लेना पड़ेगा एक्सेलरेशन एज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओरिजिनली 2 था, उसको हमने 2 मल्टीप्लाई किया, डबल किया, तो क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो तब हमारा मास हो जाएगा डबल. आर यू गेटिंग? अभी देखो, m इंटू 2, मास कितना था? 12. 12 इंटू 2 24 हमारा ओरिजिनल है, उसको इंटू 2 करना है तुम्हें. करेक्ट है. तो हम एक्सेलरेशन को डबल कर देंगे. आर यू गेटिंग? तो देखो अब F इज इक्वल टू मास था तुम्हारा 12 और एक्सेलरेशन हमने किया 4, तब आएगा हमारा ये 48 न्यूटन, तब डबल होगा. तो हमें एक्सेलरेशन कितना? इफ द फोर्स को डबल किया गया है तो एक्सेलरेशन डबल होगा. यू शुड रिमेंबर दिस. सो इफ यू वांट टू डबल द फोर्स, एक्सेलरेशन हैज टू बी डबल्ड. तो एक्सेलरेशन पहले 2 था, उसको हमने डबल कर दिया 4, क्योंकि मास बॉडी का चेंज नहीं होने वाला. हैव यू गॉट इट? सो व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन इफ द फोर्स वेर डबल्ड? सो देयरफॉर acceleration will be 4 meter per second square is your answer. Is this clear? Okay. Then you have next question. A man pushes a box of mass
50 kg with a force of 80 Newton. ठीक है. Now what is given to us? Mass of the body. Mass is 50 kg. Correct. With a force of 80 Newton. Force आ गया 80 Newton. Correct. Now what will be the acceleration of the box? How will you find out? Again we will use second law. Second law is F is equal to ma. Correct. F is 80, mass is 50 और हमें क्या ढूंढना है? एक्सेलरेशन. क्लियर. तो अब हम क्या करेंगे? 50 विल गो डाउन, तो 80 अपॉन 50 बिकम्स एक्सेलरेशन. तो अगर हमने 8 को 5 से डिवाइड किया, अब हम 8 को 5 से डिवाइड करेंगे. 5 1 5, 3 रिमेन्स, पुट अ पॉइंट, 0, 5 6 30. तो हमें कितना मिल रहा है? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन. क्लियर. सो हमें इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मिल गया. व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन. नाउ व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन इफ मास वेर हाफ्ड. अगर हमने मास को हाफ कर दिया, यस, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा? सो मास को हमने क्या किया? हाफ कर दिया. Yes, so what would be the acceleration if mass were half? और हमें फोर्स कितना रखना है? फोर्स 80 रखना है और मास को हाफ करना है, तो एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट गिरेगा? यस, तो हम क्या करेंगे? हमारा फोर्स तो हमें 80 रखना है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. हमारा मास हो जाता है हाफ ऑफ एम. हाफ ऑफ एम मतलब हाफ ऑलरेडी 50 था, तो हाफ ऑफ 50 यू गेट 25. करेक्ट. तो हमारा एक्सेलरेशन कितना रहेगा वो हमें ढूंढना है. आर यू गेटिंग? तो हमारा सेम फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए. F हमारा 80 है, मास हमारा 25 है, इंटू A. तो A इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 25. तो जब हम 80 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? यस, कम ऑन. 80 3 75, 5 बचेगा, पॉइंट लिया. 80 टू 25 3 75. करेक्ट. यू हैव टू डिवाइड 80 विथ 25. 25 3 75, 5 रिमेन्स, पॉइंट 0, 25 2 50. सो व्हाट यू गेट? 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हैव यू गॉट इट? यस. तो अगर हमने मास को हाफ किया तो भी हमें एक्सेलरेशन डबल करना है, तभी हमारा फोर्स सेम रहेगा. यस, सी इट वाज 1.6 बिफोर, नाउ यू गॉट 3.2. क्लियर? यस. ओके. नाउ यू हैव अनदर क्वेश्चन. अ सर्टेन फोर्स exerted for 1.2 seconds raises the speed of an object from 1.8 to 4.8. Now 1.2 seconds क्या दिया हुआ है? That is time. Correct. 1.2 seconds. Now the speed rises from 1.8 to 4.2. तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है 1.8 मीटर पर सेकेंड. यस. फाइनल वेलोसिटी है 4.2 मीटर पर सेकेंड. और हमें ढूंढना क्या है? Later the same force is applied for 2 seconds. How much does the speed change in 2 seconds? हमें पहले क्या करना पड़ेगा इस केस में? हमें फोर्स निकालना है. यस, स्पीड चेंज निकालना है हमें. सेम फोर्स इज अप्लाइड. सो हियर इन द फर्स्ट केस हमें पहले फोर्स निकालना पड़ेगा. फोर्स निकालने के लिए पहले हमें एक्सेलरेशन चाहिए. हमारा फॉर्मूला है F इज इन m इंटू ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ. पर फोर्स निकालने के लिए वी नीड फर्स्ट एक्सेलरेशन. तो हम पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? v माइनस यू बाई टी. v कितना है? 4.2. u कितना है? 1.8 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 1.2 सेकेंड. नाउ माइनस 4.2. 4.2 minus 1.8, how much? 3. This is 12. 12 minus 8, 4. 3 minus 1, 2. So what you get? 2.4. तो हमें कितना मिलेगा? 2.4 divided by 1.2. Now to remove this point, put 10 here. To remove this point, put 10 here.
करेक्ट। तो हमारा 10 10 कट, क्या बचता है 24/12, करेक्ट। नाउ 12 से हम ये कट करेंगे तो हमें मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, इट इज क्लियर। नाउ अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर 2 सेकेंड्स। ओके, नाउ इधर फर्स्ट केस में हमें ये मिल गया है 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, फोर्स अगर हम निकालते हैं, यस हमें मास दिया है बॉडी का, यस मास इज नॉट गिवन, सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट फोर्स। दे हैव जस्ट आस्क्ड कि सेम फोर्स अप्लाई किया है 2 सेकेंड्स के लिए, तो हाउ मच डज द स्पीड चेंज। यस, तो हम क्या करेंगे, फोर्स हम कैलकुलेट, हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, नॉट नीडेड। हमारा सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, करेक्ट। फोर्स सेम लगा रहे हैं मतलब एक्सेलरेशन सेम लगा रहे हैं। रीज़न, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास तो चेंज नहीं होगा, फोर्स जितना है उतना ही एक्सेलरेशन रहेगा। आर यू गेटिंग। ना ओनली इधर चेंज किया हुआ है टाइम, और हमें क्वेश्चन में क्या ढूंढने बोला है, जस्ट सी हाउ मच डज द स्पीड चेंज। स्पीड चेंज का मतलब क्या होता है, v माइनस यू। v माइनस यू इज चेंज इन स्पीड। आर यू गेटिंग। v माइनस यू क्या है, चेंज इन स्पीड, और हमारा एक्सेलरेशन रहेगा सेम 2, पर हमारा टाइम चेंज हो रहा है। उन्होंने हमें टाइम दिया है इन 2 सेकेंड्स। सी द क्वेश्चन, चेंज इन 2 सेकेंड्स दिया है, तो हम क्या करेंगे इधर 2 सेकेंड्स। तो हमें ढूंढना है v माइनस यू विच इज चेंज इन स्पीड। सो टेक दिस 2 हियर, सो 2 into 2 gives you v minus u. So you get 4 meter per second as v minus u, which is change in speed. Have you got? So this is your change in speed. Fine. Okay. Okay, question number 5. Here we have a question. A constant force acts on an object of mass 5 kg. So what are we given? Mass is 5 kg for a duration of 2 seconds. So time is given as 2 seconds, and it increases the object's velocity from 3 to 7. So initial velocity is 3 meter per second. Final velocity is 7 meter per second. Okay, now find the magnitude of the applied force. Now the formula for force is mass into acceleration. Now for finding force, first you need acceleration, and what is the formula for acceleration? V minus u by t. So first we know all these values, we will substitute, find a. So v is 7 and u is 3, divided by time is 2. So 7 minus 3 comes 4, divided by 2. So acceleration comes 2 meter per second square. So now you can easily calculate force. Yes, you know mass. Force is mass into acceleration. Mass is 5. Acceleration is 2. So answer comes to 10 Newton. Okay. Now same force is applied for a duration of time of 5 seconds. So now the second part of the question, force you will take 10 Newton, time you will take 5 seconds. So what would be the final velocity? Okay, they have asked you final velocity of the object, and initial velocity we will consider same as 3, which is taken before. So that also we will consider in this question. 3 meter per second we have to find out final velocity. Okay, now here in this case we have formula F is equal to ma. So first we will find out acceleration. So F upon m will go down, gives you acceleration. So what is the value of F is 10, mass is F is 10, and what is the value of mass is 5. So this comes to acceleration as 2 meter per second square. Okay,
Now we have to calculate final velocity. Now comes your first chapter, first equation of motion. V is equal to u plus at. Yes, u is 3 and a is 2 and time is 5 seconds. So this comes to 3 plus 10, which is 13 meter per second. So final velocity comes to 13 meter per second. Okay. Question number 6. Here you have the velocity time graph of a ball of mass 20 grams. So what we are given? Mass is 20 gram. Okay. So mass of the body is given as 20 gram. Now 20 gram, first you will convert into kg. So 20 divided by 100 gives you 20 into 10 raised to minus 3. Yes, so it comes to 20 into 10 raised to minus 3 kg. Okay, now from the figure, what is given? Moving along a straight line on a long table is given in the figure below. How much force does the table exert on the ball to bring it to rest? So here body starts from here, this point, that is your initial velocity u. So u is 20 centimeter per second. Okay, and body comes and finally stops here. So this is your v, which is 0. Okay, now so I take u as 20 centimeter per second. Now convert this to centimeter. How you will convert? Divide 20 by 100. So it comes to 0.2 meter per second. Yes, final velocity is 0. Okay, so final velocity is 0. Now time, how much time is taken here? It comes to stop in 10 seconds. So time is 10 seconds. Okay, now you have initial velocity, final velocity, time, and you want, in this sum, what we need to find out is force. How much force does the table exert? So formula for force is F is equal to ma. Okay, now first we will find out acceleration, that is v minus u by t. V is 0, u is 0.2, time is 10 seconds. Fine. Okay, so it comes to minus 0.2 by 10. We will keep it as it is, acceleration. Okay, which will help us for easy calculation. Then we need to find out force. Force is given by formula mass into acceleration. What is the mass of the body? 20 into 10 raised to minus 3. So we will substitute 20 into 10 raised to minus 3. Acceleration minus 0.2 by 10. Okay, so now this will get cancelled. Fine. Now 2 into 0.2, how much it becomes? And minus will remain as it is. 2 into 0.2 is 0.4 into 10 raised to minus 3. Now see this 0.4. To remove this 0.4, I put 10 here. So what I get? Minus 4 upon 10 into 10 raised to minus 3. Okay. Now this is minus 3 and this 10 is 1. When this 10 will go up, it will become 10 raised to minus 1 into 10 raised to minus 3. So it becomes minus 4 into 10 raised to minus 4 Newton. Okay. Fine. Okay, question 7. A body of mass 1 kg is kept at rest. A constant force of 6 Newton starts acting on it. So what is the data given to us? Yes, data given to us is mass is 1 kg, force acting is 6 Newton. Okay, 6 Newton. Find the time taken by the body to move through. So you have to find out time, and distance is given as 12 meter. Okay, now to find out time, what formula you will use? Yes, you will use second equation of motion. S is equal to ut plus half at square. Okay, now here time you have to find out by
Do you know initial velocity? Yes, the body mass is kept at rest. So initial velocity is also 0. Okay. Now, you know you need to find out time, and you know s. So but we don't know acceleration. So we can find acceleration first using this formula from mass and F. You know formula, F is equal to ma. F is 6, mass is 1 into acceleration. So 6 by 1 you get acceleration. So what is the acceleration that you get? Acceleration is 6 meter per second square. Okay. Now after this we need to find out time. So we will use this equation. Yes, our equation is s is equal to ut plus half at square. Now s, we already know s is 12, u is 0 into time is, time you have to find out, plus half, acceleration is 6 and time you have to find out. Okay. Now 12 is equal to 0 plus 2 3s are 3t square. Now 12 is equal to 3t square. Correct. Now take this 3 down. So our question becomes 12 divided by 3 is equal to t square. 3 4s are. So t square is 4. T is given by root of 4, which comes to 2 seconds. Okay. Fine. So these many sums you solve, all on Newton's second law of motion. Fine. And practice such type of more numericals. Okay, bye. Thank you.